Lesson 13. God be praised. Alhamdulillah. Hissa Awwal. Theme. In this story, Ahmed Nadeem Kazmi has depicted the life of a village Maulvi and his miseries relating to his domestic life, his low income and the marriages of his daughters, and about suitable matches for his daughters. इस कहानी में अहमद नदीम कासमी गांव के एक मौलवी की घरेलू ज़िंदगी, उसकी कम आमदनी और उसकी बेटियों की शादियों और उनके लिए मुनासिब रिश्तों से जुड़े मसाइब की तस्वीर कशी करता है। Most outstanding Pakistani progressive poet, also counted among leading fiction writers, edited an important literary magazine Fanoon, Ahmad Nadeem Kasmi. 1916-2006 लाइफ स्पैन है। Was a poet and a writer of national repute. He was born in a small village of Anga in Khushab district. Our life on earth is a trial for us. We go through many tribulations in our lives. We can get through these trials and tribulations with patience and unflinching faith in Allah Almighty. Maulvi Abul is a poor person with a number of children to take care of. When his eldest daughter grows young, his tensions also grow. Most of the time he is lost in worries about the suitable marriage of his daughter. He has a little saving which is not enough. थोड़ी सी बचत है उसके पास जो काफ़ी नहीं है. This social picture depicts that our Imam Masjid is low paid. Chaudhry Fateh helps Maulvi Abul in finding a suitable match for his daughter. Shamim Ahmed marries his daughter with great pomp. Then Maulvi turns his attention to his second daughter, who is young enough to get married. Maulvi Abul here shows his faith in Allah. He says that Allah Almighty will arrange for the good fortune of his children, which show his gratitude to Allah for his benevolence. Before his marriage, Maulvi Abul Barkat, alias Abul, used to live in comfort, even pomp. On his head, he wore a light brown turban known as Mazhadi Lunjai, because it originally came from Mazhad in Iran. The gilded tip of his cap used to shine brightly above the turban. He always carried a walking stick, a sort of scepter with decorative bands of brass and gilt. For his hair, he used fragrant oil. Its sweet pungent smell lingered in the village lanes whenever he walked through them. Maulvi Abul had slightly bulging eyes. On his fingers he wore silver rings with large turquoise stones. These rings came off his fingers 5 times a day before ablutions, and yet no change was ever observed in the order in which they were worn. अपनी शादी से पहले मौलवी अबुल बरकात उर्फ अबुल आराम से रहता था, यहाँ तक कि शान व शौकत से रहता था। अपने सर पर उसने हल्की भूरी पगड़ी पहनी होती थी, जिसे मशदी लुंगी कहा जाता है, क्योंकि ये असल में ईरान के शहर मशद से आई थी। उसकी टोपी की सुनहरी नोक पगड़ी के ऊपर चमकती थी। वो हमेशा पीतल और सोने के पानी चढ़े आराइशी बैंडों के साथ चलने की छड़ी, एक तरह का असा, अपने साथ रखता था। अपने बालों के लिए वो खुशबूदार तेल इस्तेमाल करता था। जब भी वो गांव की गलियों से गुजरता तो उसकी मीठी तेज़ खुशबू फैली रहती। मौलवी अबुल की आंखें हल्की सी उबलती थीं। उसने अपनी उंगलियों में बड़े फ़िरोज़ी पत्थरों के साथ चांदी की अंगूठियां पहन रखी थीं। ये अंगूठियां दिन में 5 बार वुज़ू से पहले उसकी उंगलियों से निकलती थीं, फिर भी उनको पहनने की तरतीब में कभी कोई तब्दीली नहीं देखी गई। Every Eid, after his sermon, whenever the cotton bag containing from 150 to 200 rupees collected from the devotees happened to fall with a thud, he distributed 40 to 50 rupees in the presence of the worshippers among the needy and the poor of the village. After each such act, he used to say, "Please don't pray for me. Remember the benevolent Almighty Allah. If He creates insects in stones, He supplies their food there too. Please do not bless me. What has He not blessed me with? Health, peace of mind, freedom from care, I have everything one can desire."
I don't need anything more from his unlimited treasure of divine blessings. Like the children who came in quick succession, the times, too, had changed fast. A pair of shoes for his firstborn, Meranisa, had cost him 1 rupee. For his youngest daughter, he was now asked to pay 6 rupees for a pair. हर ईद के खुतबे के बाद जब कभी कपड़े का थैला जिसमें 150 से 200 रुपए अकीदतमंदों से इकट्ठे होते थे ज़ोर से गिरता, आप नमाजियों की मौजूदगी में गांव के ज़रूरतमंदों और गरीबों में 40 से 50 रुपए तकसीम कर देते। इस तरह के हर अमल के बाद वो कहते थे, मेरे लिए दुआ ना करो, रहमान अल्लाह को याद करो। अगर वो पत्थरों में कीड़े मकोड़े पैदा करता है तो वो उनकी खुराक भी वही मुहैया करता है। मुझ पर रहम ना करो, उसने क्या नेमत नहीं दी। मेरे पास सेहत, ज़हनी सुकून, देखभाल से आज़ादी, मेरे पास वो सब कुछ है जिसकी कोई ख्वाहिश कर सकता है। मुझे उसके लामहदूद ख़ज़ाइन इलाही से ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। जिस तरह बच्चे जल्दी जल्दी पैदा हुए, ऐसे ही वक्त भी बहुत तेज़ी से बदला। उसकी पहली बेटी मेहरुन निसा के जूतों के एक जोड़े के लिए 1 रुपया खर्च हुआ करता था। अब सबसे छोटी बेटी के लिए उसे एक जोड़े के 6 रुपए देने को कहा गया। When he complained, the shoemaker said, Maulviji, I didn't charge more for your sake. Had it been someone else, I could easily have wangled 10 rupees. The cost of leather has gone sky high. Prices have risen so suddenly that it seems as though all the cows and buffaloes in the country have been dispatched to the Mount Caucasus. My cost price is 512. Believe me, my profit is only 4 annas. Come on, Maulviji, don't look disappointed and, pray, don't give me even that 4 annas bit. I will charge only what I have spent for these dainty shoes. If I am lying, the curse of Allah be on me, and may I be drowned in some pond. May I even be deprived of a decent burial. उसने शिकायत की तो मोची ने कहा, मौलवी जी, मैंने आपकी खातिर ज़्यादा कीमत नहीं ली। अगर कोई और होता तो 10 रुपए बआसानी लौटा सकता था। चमड़े की कीमत आसमान को छूने लगी है। कीमतें अचानक इतनी बढ़ गई हैं, ऐसा लगता है जैसे मुल्क की तमाम गायें और भैंसें को कफकाज पर रवाना हो कर दी गई हैं। मेरी कीमत 5/12 है। यकीन कीजिए मेरा मुनाफा सिर्फ 4 आना है। चलो मौलवी जी, मायूस ना हूँ, दुआ है कि मुझे वो 4 आना भी ना दीजिए। मैंने इन प्यारे जूतों के लिए जो खर्च किया है सिर्फ उतना ही लूँगा। अगर मैं झूठ बोलूँ तो मुझ पर अल्लाह की लानत हो और मैं किसी तालाब में गर्क हो जाऊँ, एक बावकार तदफीन से महरूम रहूँ, यानी मुझे सही से जनाजा भी नसीब ना हो। If it were possible to get the necessities of life from the heavens through prayers, Maulvi Abul would have prayed to Allah for a pair of shoes for his Umda, the youngest in the family. At night he consulted his wife. But instead of replying, she silently lifted a corner of the quilt to expose Umdatunnis's small, bare feet. Seeing those dainty feet, Maulvi Abul burst into tears like a child. Next day, after his morning prayers, he went to the shoemaker and paid him 5 rupees and 12 annas and bought the shoes. Leaving his shop, he vowed, with Allah as his witness, never to use the powdered tobacco that he loved. Short stories. When Mehrun reached the age of 14, Maulvi Abul's prayers became intense and prolonged. During Ramadan, he led the nightly Taraweeh prayers as usual. But the same Maulvi Abul who never had made a single mistake, began straying from one surah of the Holy Quran to another. अगर दुआओं के ज़रिए ज़रूरियात ज़िंदगी आसमान से हासिल करना मुमकिन होता तो मौलवी अबुल अपने ख़ानदान में सबसे छोटी उम्दा के लिए अल्लाह से जूतों का एक जोड़ा मांगता। रात को उसने अपनी बीवी से मशवरा किया, लेकिन जवाब देने के बजाय उसने खामोशी से लिहाफ का एक कोना उठाकर उम्दतुन्निसा के नंगे पांव सामने कर दिए। उन दागदार कदमों को देखकर मौलवी अबुल बच्चों की तरह रो पड़े। अगले दिन सुबह की नमाज के बाद वो मोची के पास गया और उसे 5 रुपए और 12 आना देकर जूते खरीदे। दुकान से निकलकर उसने अल्लाह को गवाह बनाकर अहद किया कि वो पाउडर तंबाकू को कभी इस्तेमाल नहीं करेगा, जो उसे पसंद था। जब मेहरुन 14 साल की उम्र को पहुंची तो मौलवी अबुल की दुआएं शदीद
और लंबी हो गईं। रमज़ानुल मुबारक में आपने मामूल के मुताबिक रात को तरावी की नमाज पढ़ाई, लेकिन वही मौलवी अबुल जिसने कभी एक गलती नहीं की थी, कुरान पाक की एक सूरत से दूसरी सूरत की तरफ भटकने लगे। Sometimes unconsciously he repeated the same chapter twice in the same part of prayer. Once when Chaudhry Fateh, the member of the district board, reprimanded him for a mistake, Maulvi Abul felt like shouting back at him, "You have a whole row of boys. Chaudhry Sahib, had you also been blessed with a daughter, then you would understand why I repeated a chapter of the holy book twice." But Chaudhry Fateh's censure was purely religious. Why, he was the same pious Muslim, the head of the village, who every evening for years had been sending Maulvi Sahib home-baked bread smeared with ghee and an earthen bowl of dal. He was very regular in his offering. If for some reason the daily offering of the evening meal was delayed, Chaudhry Fateh would carry it himself to Maulvi Abul's house and apologize for the delay, saying, "I am terribly sorry, Maulvi ji. My wife is unwell, so the maid has cooked the food." He sincerely considered the daily gift to Maulvi Abul a part of his daily worship. बाज़ औक़ात लाशऊरी तौर पर उसने नमाज के एक ही हिस्से में एक ही बाब को 2 बार दोहराया। एक बार जब डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के मेंबर चौधरी फतेहदाद ने उनकी गलती पर सरजश की तो मौलवी अबुल जवाब में उन पर चिल्ला कर बोले, "चौधरी साहब, आपके पास लड़कों की एक पूरी कतार है। अगर आपको बेटी भी नसीब होती तो आप समझते कि मैंने मुक़द्दस किताब के एक बाब को 2 बार क्यों दोहराया?" लेकिन चौधरी फतेहदाद की सरजश खालिसतन मजहबी थी, क्योंकि वो वही अमीर परहेजगार मुसलमान गांव का सरबराह था जो बरसों से हर शाम मौलवी साहब को घी से भरी हुई रोटी और दाल का एक प्याला भिजवा रहा था। वो अपनी पेशकश में बहुत बाकायदा था। अगर किसी वजह से रोज़ाना शाम के खाने में ताख़ीर हो जाती तो चौधरी फतेहदाद खुद मौलवी अबुल के घर ले जाते और ताख़ीर की माफ़ी मांगते और कहते, "मुझे बहुत अफसोस है मौलवी जी, मेरी बीवी की तबीयत नासाज है, इसलिए नौकरानी ने खाना पकाया।" वो मुखलिसाना तौर पर मौलवी को रोज़ाना तोहफ़ा देने को अपनी रोज़मर्रा की इबादत का हिस्सा समझते थे। Conscious of the ever-increasing responsibilities of her husband, Zibanisa too had started teaching young girls of the village the Holy Quran. On Thursday, when each of the girls brought a small portion of sugar on bread, Zibanisa would arrange for at least 2 baskets. These small baskets were used to store morsels of home-baked bread. But there was yet another problem. Besides bread to fill their bellies, they also needed clothes to cover their bodies. Chaudhry Fateh used to present new clothes to Maulvi Abul once a year after every harvest. Whenever these clothes came, a tailoring shop would spring up in Maulvi Abul's house. Zibanisa, with the assistance of Mehroon and Zabda and Shamsun, would cut them into smaller outfits for the younger kids. If he ever received some extra money, this bonus would usually be locked up in a tin box. अपने शौहर की बढ़ती हुई जिम्मेदारियों से आगाह ज़ेबुन्निसा ने भी गांव की नौजवान लड़कियों को कुरान पाक पढ़ाना शुरू कर दिया था। जुमेरात को जब हर लड़की रोटी पर चीनी का एक छोटा सा हिस्सा लाती, ज़ेबुन्निसा कम से कम 2 टोकरियों का इंतज़ाम करती। ये छोटी टोकरियां घर में पकी हुई रोटी के टुकड़े ज़ख़ीरा करने के लिए इस्तेमाल होती थीं। लेकिन एक और मसला था। पेट भरने के लिए रोटी के अलावा अपने जिस्म को ढांपने के लिए कपड़ों की भी ज़रूरत थी। चौधरी फतेहदाद हर फसल के बाद साल में एक बार मौलवी अबुल को नए कपड़े पेश करते थे। जब भी ये कपड़े आते तो मौलवी अबुल के घर टेलरिंग की दुकान खुल जाती। ज़ेबुन्निसा मेहरुन और ज़ब्दा और शमसुन की मदद से उन्हें छोटे बच्चों के लिए छोटे लिबास में काट देती थीं। अगर उसे कभी कुछ इजाफी रकम मिलती है तो ये बोनस आम तौर पर टिन के डब्बे में रख दिया जाता। With the passage of time, the appetites of the children increased.
Maulvi Abul was caught in the whirl of life. Time had not been kind to him. The hair around his temples had become silvery white. The grip of his teeth on his gums had for long been loose. But his voice remained resonant. However, sometimes that too quivered. Chowdhury Fatih Dad was the only one who knew the reason. Maulvi Abul had once opened his heart to him about a suitable match for Mehroon. The Chaudhry had carefully considered the eligibility of all the young men of the village. There were some whom he found suitable. But the trouble was that everyone in the community knew Maulvi Abul well. Chowdhury Fatih Dad tried to negotiate with a couple of elders, but all of them drew back as if bees had suddenly sprung from a bed of flowers. वक्त के साथ साथ बच्चों की भूख बढ़ती गई। मौलवी अबुल जिंदगी के चक्कर में फंस गए। वक्त उस पर मेहरबान नहीं था। उसकी कनपटियों के इर्द गिर्द के बाल चांदी की तरह सफ़ेद हो चुके थे। उसके मसूड़ों पर दांतों की गिरफ्त काफ़ी वक्त से ढीली पड़ रही थी, लेकिन उसकी आवाज़ की गूंज अभी बाकी थी। ताहम कभी कभी वो भी कांप जाती। उसकी वजह सिर्फ चौधरी फतेहदाद ही जानते थे। मौलवी अबुल ने एक बार उसके सामने मेहरून के लिए मुनासिब रिश्ते के बारे में अपना दिल खोल दिया था। चौधरी ने गांव के तमाम जवानों की अहलियत का बगौर जायज़ा लिया था। कुछ ऐसे भी थे जिन्हें उसने मुनासिब पाया, लेकिन मुसीबत ये थी कि बरादरी के सभी लोग मौलवी अबुल को अच्छी तरह जानते थे। चौधरी फतेहदाद ने एक दो बुज़ुर्गों से बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन वो सब इस तरह पीछे हट गए जैसे फूलों के बिस्तर से अचानक शहद की मक्खियाँ निकल आएं। Ultimately, Maulvi Abul's and Zibanizer's prayers bore fruit. A young man from the village who had gone away came back and opened a small cloth shop. He called himself Shamim Ahmed. He was the only son of a Hafiz. After the death of his father, Khudaya tried to follow his father's footsteps. When he was about 16, he went away to the city, leaving his old mother behind. Later they learned that he had worked in the house of a head clerk, after which he had managed to open a small shop on a footpath where he began selling cut pieces. After saving some money and gaining experience in the business, he returned to the village. He then begged Maulvi Abul to inaugurate and bless his shop by becoming his first customer. That day, in order not to disappoint his erstwhile disciple and his aged mother, Maulvi Abul took a momentous decision. आखिरकार मौलवी अबुल और ज़ेबुन्निसा की दुआएं रंग ले आईं। गांव का एक नौजवान जो चला गया था वापस आया और कपड़े की एक छोटी सी दुकान खोल ली। वो खुद को शमीम अहमद कहता था। वो एक हाफिज का इकलौता बेटा था। अपने वालिद की वफ़ात के बाद खुदायार ने अपने वालिद के नक्श कदम पर चलने की कोशिश की। जब वो तकरीबन 16 साल का था तो वो अपनी बूढ़ी माँ को पीछे छोड़कर शहर चला गया। बाद में उन्हें मालूम हुआ कि वो एक हेड क्लर्क के घर काम करता था, जिसके बाद वो फुटपाथ पर एक छोटी सी दुकान खोलने में कामयाब हो गया था, जहां उसने कटे हुए टुकड़ों को बेचना शुरू कर दिया था। कुछ पैसे बचाने और कारोबार में तजर्बा हासिल करने के बाद वो गांव वापस चला आया। उसके बाद उसने मौलवी अबुल से दरख्वास्त की कि वो उसका पहला गाहक बनकर उसकी दुकान का इफ्तिताह करें और बाइसे बरकत हूँ। उस दिन अपने साबिक शागिर्द और अपनी बूढ़ी वालदा को मायूस ना करने के लिए मौलवी अबुल ने एक अहम फैसला किया। He went to his wife and said, Shamim Ahmed wants me to inaugurate his shop by becoming his first customer. If you agree, let us buy a piece of cloth for Mehroon's suit. In any case, we will need it for her dowry. My purchase in the presence of the entire village may impress them. May Allah bless you, she blurted out and immediately took out the key which hung in a thread around her neck. She opened the trunk, took out the tin box and placed it before her husband. As she opened it, her eyes suddenly became bright with unshed tears. Just then Mehroon walked in. Then she turned back with a smile, almost as if she was thinking, I know the secret of Abbas' readiness to inaugurate Shamim Ahmed's shop. Maulvi Abul counted his savings. There were 43 rupees. He put the money into his pocket, stood up slowly and said, If somehow Mehroon can be married, all my worries will disappear.
वो अपनी बीवी के पास गया और कहा, शमीम अहमद चाहता है कि मैं उनका पहला गाहक बनकर उसकी दुकान का इफ्तिताह करूं। अगर आप राज़ी हैं तो मेहरून के सूट के लिए एक कपड़ा ख़रीद लें। बहरहाल हमें उसके जहेज़ के लिए उसकी ज़रूरत पड़ेगी। पूरे गांव की मौजूदगी में ख़रीदारी उन्हें मुतासर कर सकती है। अल्लाह आपका भला करे। वो झुंझला कर बोली और फ़ौरन उसके गले में धागे में लटकी हुई चाबी निकाल ली। उसने ट्रंक खोला, टीन का डब्बा निकाला और अपने शौहर के सामने रख दिया। उसे खोलते ही उसकी आंखें अचानक आंसुओं से चमक उठीं। तभी मेहरून अंदर चली गई। फिर वो मुस्कुराते हुए वापस मुड़ी, तकरीबन जैसे वो सोच रही हो, शमीम अहमद की दुकान के इफ्तिताह के लिए अब्बा की तैयारी का राज मुझे मालूम है। मौलवी अबुल ने अपनी बचत शुमार की। 43 रुपए थे। उसने पैसे जेब में डाले, आहिस्ता से खड़ा हुआ और बोला, अगर किसी तरह मेहरून की शादी हो जाए तो मेरी सारी परेशानियां ख़त्म हो जाएं। I will feel as light as a feather, at least for some years to come. When Molvi Abul reached Shamim Ahmed's new shop, he found a crowd had already assembled there to watch the proceedings. Most of the onlookers were women. They lingered to gaze with wistful longing at the colorful display. Molvi Abul inaugurated the shop by first reciting verses from the Holy Quran in his powerful voice. Then he selected a piece of pink cloth with beautiful flowers nestling amidst yellow dots. I will need a piece from this for a young lady's suit, he said loudly. Overjoyed, Shamim Ahmed picked up his yardstick, uttered, in the name of Allah, silently, measured 7 yards, picked up the large pair of scissors and cut the cloth. He then folded it neatly and placed it before Molvi Abul with respect. He almost seemed to be offering it as a gift. How much should I pay? Molvi Abul asked. Out of respect, Shamim Ahmed hesitated for a moment, rubbed his palms, cleared his throat and replied, at the rate of 6 rupees per yard, it will be 42 rupees, sir. मैं कम अज़ कम आने वाले कुछ सालों तक एक पंख की तरह हल्का महसूस करूंगा। जब मौलवी अबुल शमीम अहमद की नई दुकान पर पहुंचे तो देखा कि वहां पहले से ही एक हजूम कार्रवाई देखने के लिए जमा है। तमाशाइयों में ज़्यादातर ख़वातीन थीं। रंग बिरंगे डिस्प्ले को देखकर मौलवी अबुल ने पहले कुरान पाक की आयात पढ़कर दुकान का इफ्तिताह किया। फिर उसने गुलाबी कपड़े का एक टुकड़ा मुंतखब किया जिसमें खूबसूरत फूल पीले नुक्तों के दरमियान बसे हुए थे। ये एक नौजवान खातून के सूट के लिए है, उसने बुलंद आवाज़ में कहा। खुशी से शमीम अहमद ने कपड़ा नापने की छड़ी उठाई, खामोशी से अल्लाह के नाम पर कहा, 7 गज नापा, बड़ी कैंची उठाई और कपड़ा काट दिया। उसके बाद उसने उसे सफाई से तय लगाकर मौलवी अबुल के सामने एहतराम के साथ रख दिया। ऐसा लगता था कि वो उसे बतौर तोहफा पेश कर रहा है। मैं कितना अदा करूं? मौलवी अबुल ने पूछा। शमीम अहमद एक लम्हे के लिए हिचकिचाया, हथेलियों को रगड़ा, गला साफ किया और जवाब दिया, 6 रुपए फी गज के हिसाब से 42 रुपए होंगे जनाब। Happy learning!